Namaste everyone, welcome to Shloka Chant with Yeshu. Till now we have covered till 30 verses. So let's start with the today's class. 31st. You can see the lyrics here, or you can take the lyrics from your book if you are following any book from the local shop. We'll start with the 31st. Ashta Siddhi, Dhi stress. Nava ke data, Nava Dhi stress. Ashta Siddhi, Ashta is a number 8, Nava is a number 9. Ashta Siddhi, 8 kind of a superpowers. Nava Nidhi means a treasure, 9 kind of a treasure. Nava ke data, data is a giver. So Hanuman, you are the one who gives 8 kind of a superpower, Ashta Siddhi, and 9 kind of a treasure to me. Ashta Siddhi, Nava ke data, Asbar Deen, Janaki Mata, Asbar Deen, Janaki Mata. So this boon is given to you by Janaki Mata. We'll go with the next one. राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा. राम रसायन तुम्हारे पासा. O Hanuman, Ram's love, the devotion is always with you. Sada raho, always be Raghupati ke dasa. Raghupati is another name for Rama. We already know that. So you always be a very loyal. We can't call as a servant. The God for a God. G-U-A-R-D. God for Bhagwan Ram. We'll go for the 33. Tumhare bhajan bhastress Ram ko pavai. So by remembering your name, by chanting about you, I can even reach Rama. Ram ko pavai. Janm janm ke. Dukh bisravai. Dukh is a sadness or a sorrow. So all the kind of a sorrows of all the birth, it will go off. So the entire life cycle sorrows will go off with just your name. तुम्हारे भजन राम को पावई जन्म जन्म के दुख बिसरावई. 34. अंत काल रघुपतिपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई. हरि भक्त भास्ट्रेस. So Antkala, at end of my life, I will reach Rama. I'll reach Rama. Jaha Janm Hari Bhakt Kahahi. So who is telling this? Author is telling this. I'll reach Rama at end of my life. Then I'll be known as a Hari Bhakta. Hari is called for a Vishnu. Hara is for a Shiva. So Bhakta is a devotee. I'll remain as a Hari Bhakta, the devotee of a Hari. Aur Devata Chittana Darayi. Aur Devata, all the other Devatas, other God. Chittana Darayi. Chitta is a mind, okay? So there is no need for me to remember any other deity. There is no need for me to worship any other God or the deities. Hanumat Soyi Sarva Sukh Karayi. So Hanuman is enough to get all the kind of a happiness. Sarva is a all. Happiness is a sukh. So Hanuman is enough to get me all the kind of happiness. We'll go for the last one for the day. Sankat harai mitai sab peera. So when there is a sankat, when there is a problem, so with just remembering his name, he will remove all the kind of a problem. Mitai sab peera. He'll remove all the problem. He'll solve all the problem. Jo sumirai Hanumat balabira. So whoever think about Hanuman, they're all the kind of a problem, the disease, sickness, sorrow, everything will be removed by Hanuman. So this is the 36th one. So we'll repeat from 31 to 36, which is we have done in today's class. We'll start from the 31. Ashta Siddhi Navanidhi ke data Asbar Deen जानकी माता. राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा. तुम्हारे भजन राम को पावई
जन्म जन्म के दुख बिसरावै, अंत काल रघुपति पुर जाई, जहा जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन दरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई, संकट हरै मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा. We'll go with 37. Jai 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 Hanuman Gosai. So victory for Hanuman. Krupa karahu Gurudev ki nai. So Hanuman, be my teacher. Gurudev, so be my like teacher. Victory to you, Hanuman. 38. Jo Shatbar पाठ कर जोई, जो शत बार, शत means 100 times. Whoever recite this 100 times, पाठ कर जोई. पाठ means recite. चुटही बंदी महासुख होई. चुटही बंदी, they'll get removed from all the kind of a bond, all the kind of a problem. Mahasukh hoyi, they will get a very great happiness, very great life. जो यह पढ़ई, whoever recite this हनुमान चालीसा, whoever recite this हनुमान चालीसा, जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा, होई सिद्धि, they'll get the siddhi, the powers, super powers. Sakhi Gaurisa, and also they'll get a blessings from Gaurisa. Gaurisa is a Lord Shiva. Tulasidas Sada Hari Chera. Who is the composer of this Hanuman Chalisa? That is Tulasidas. So Tulasidas, you are always a servant for Hari. Sada Hari Chera. Ki Jainath Hriday Mahadera. Ki Jainath, tha stress, Hriday Mahadera. So you will reside in his heart always, in the heart of a Lord. So that is the meaning for the 40th one. Last one. Pavanatanaya Sankatharan. Pavanatanaya. Oh, son of a Pavan, wind. Son of a wind god. Sankatharan, the one who removes all the kind of a sankat, all the kind of a problem, difficulties. Mangala Murti Roop. Mangala Murti Roop. Mangal Murati Roop. So you are the form of auspicious, your auspicious form. Rama Lakhan Sita Sahit. So together, you are always together, Rama Lakshmana Sita. Rama Lakhan, khas stress. Sita Sahit, together. Hriday Basahu. Hriday Basahu. Surabhoop. You dwell in the heart. You stay in their heart. And they will stay in your heart always. Pavanatanaya Sankatharan Mangala Murti Roop Rama Lakhan Sita Sahit Hriday Basahu Surabhoop. We'll recite from 37. Jai 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 Hanuman Gosai Krupa Karahu Gurudev ki nai. जो शत बार पाठ कर जोई, चुटही बंदी महासुख होई. जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साकी गौरीसा. तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा. पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप. So here we complete the entire Hanuman Chalisa. Now let's recite the entire Hanuman Chalisa. श्री गुरु चरण सरोज रज,
निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र औ ध्वजा बिराजै, कांधे मूंज जने ऊसाजै। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय संजीवन लखन जियाये, श्री रघुबीर हर्षि उर लाये। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावई, अस कहि श्रीपति कंठ लगावई। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सकई कहांते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाया राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नाशौ रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावै, मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावई, जन्म जन्म के दुख बिसरावई। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ई सर्व सुख करई। संकट हरई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर जोई, चुटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ई अनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। So here we complete the entire Hanuman Chalisa. If you have any doubt, any questions, please do let me know in the comment section. I'll see you all in the one more stotram very soon. Thank you so much. Namaste.